and we are going to talk about skincare, winter care routine for our toddlers. At the Baby Chakra community, we are always striving to come up with the best topics which help these moms and also give solutions by the doctors and the experts at the panel. I welcome Dr. Sushanta. How are you doing today? Thank you, Dr. Pooja. I'm doing very well. Dr. Sushanta, can you tell me something about yourself? I'm Dr. Sushanta Pai Chauhan. I'm a pediatrician with around 12 years of experience in the field of pediatric and newborn care. So I'm currently practicing consulting at Sujay Hospital, which is located at Juhu Gulmohar Road. What makes my profession far more interesting for me is that I'm also mother of two toddlers myself, and this gives me an opportunity to experiment with pediatrics at a very grassroots level with my kids in a day-to-day life. And with that, I've started my own Instagram channel, where Instagram handle, where I share my experiences, my healthcare tips on pediatrics, on mother care. So you can follow me on Dr. Sush underscore pediatrician mom, and also started my YouTube channel, again sharing about my experiences of being a pediatrician, being a mother. So that's by the name Dr. Sushanta underscore kids doc. So Okay, it's that's going so good. amazing. With toddlers at home and with, talking about winter skincare routine for toddlers and being a mom, the best inputs you can give to us over here. So basically, to start with, the winters have been harsh since a few years, and when it comes to skincare routine, mothers are really very confused on to what kind of products do we really go for. Right. So, can you just help me in what is the kind of routine thing that a mother needs to look out when her child's skin starts getting dry? So, So over with to the you. onset of winters, yeah, thank you, Dr. Pooja. So with onset of winters, as you rightly mentioned, the winds are very harsh. The humidity in the air goes down. That makes the skin very very dry. Also, in a lot of like North India, and in some very cold places in India, outside it's very cold and inside there's a heater, which makes the skin like it's exposed to a very extreme temperature, cold outside and very hot inside. That again zaps out all the moisture from the skin. So I think the skincare routine begins with your bath. Firstly, bath should be with the lukewarm water, and the limitation of time should be like it should be winded up within the less than 5 minutes. Because Acha. too much of exposure to heat will again zap away all the moisture from the skin. Other thing, after taking bath the body too hard with a towel, instead just dab it like dab, and just clean the baby. And while taking bath, I think the soap that we use shouldn't be very harsh. It should be paraben free, alcohol free, fragrance free, something like a mild cleanser with a very neutral skin pH, would be great for the baby. Also, if you're giving tub bath, you can just put in some drops of oil into it, and just immediately after bath apply moisturizer on the baby skin, because after bath still there is some moisture, natural body moistures, which are there over the skin of the baby's surface. So you want to retain that, and along with that you apply a superficial moisturizer layer over it. Okay. In winters, what we prefer is applying a cream over lotion. Correct. Lotion is more water based and cream is more emollient or oil based, so that will make the skin hydrate the skin more, it make it more plump and more moisturized. Right. Also don't But forget that yes, yes, no, Dr. no, no. Pooja. Go ahead. Also, when we're taking the baby out, we should not forget that it's winter time, so we should not forget the sunscreen part. So something sunscreen with a combination of titanium dioxide and zinc oxide would be good when you're taking the child outside for outdoor play or to the schools. बट एक प्रॉब्लम आती है एज अ मदर, जी. आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है, Yes. कि कभी एक्जिमा हो जाता है या कभी रैशेज आ जाती है विंटर्स में, स्पेशली वो रैश हील के लिए बहुत Yes. ज़्यादा टाइम लेते हैं, एंड स्पेसिफिक मतलब डर्मेटोलॉजी टेस्टेड एंड Hmm. पेडियाट्रिशियन रेकमेंडेड क्रीम्स ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लस ओवर यूसेज भी कभी कभार हो जाता है, रैश नहीं चली गई चलो लगाया. Is this the kind of a Hmm. correct routine हम लोग एज अ मदर
Is it correct what we are following at home? What is your take on this? तो अगर हम पहले से ही इसका ख्याल रखेंगे, स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखेंगे, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि स्किन बहुत ड्राई, स्केली और फ्लेकी हो। लेकिन कुछ Okay. बच्चे हैं जिनमें एलर्जिक टेंडेंसीज होती है, और स्पेशली विंटर्स में ये ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है। तो अगर Okay. आपको लग रहा है कि हम ये सब रूटीन्स और स्किन केयर रूटीन जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें हम मॉइस्चराइज करें, इमिडिएटली आफ्टर बाथ आप मॉइस्चराइजर लगाएं, फुल बॉडी को डैप डैप करें, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर लग रहा है कि स्किन में बहुत ड्राइनेस, स्केलीनेस, फ्लेकीनेस है, ब्लीडिंग हो रहा है इचिंग के वजह हाँ से, हाँ. तो आई थिंक इट्स बेटर द pediatrician, ठीक है। और इन दैट एंड दे विल गिव यू medications which would be like a combination of emollient, something more moisturizing. Sometimes some small amount of steroids also could be required to stop that flare up of eczema in अच्छा. children. कई बार विंटर्स में फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली टो नेल्स में, because Yes. that's where the fungus resides and starts growing, especially in the socks, because socks wet रहते हैं। तो वो एरिया भी हमें ध्यान से देखने कि वहाँ पे कोई रेडनेस, इचीनेस तो शुरू नहीं हो रही है। एंड देयर आर सम फंगल एंटी फंगल पाउडर्स जो आप सॉक्स में डस्ट करके बच्चे को पहना सकते हैं। ऑल्सो हमेशा ध्यान रखिए कि सॉक्स जो है वो कंप्लीटली ड्राई हो पहनाने के पहले। तो और अगर कोई भी लग रहा है कि जैसे पिट्रियासिस अल्बा करके एक कंडीशन है जो विंटर्स में देखी जाती है, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, Mm-hmm. इट्स बिकॉज ऑफ Mm-hmm. द ड्राइनेस ऑफ द स्किन, ठीक है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि हाइपोपिगमेंटेड हो रहा है, स्किन बहुत ड्राई, फ्लेकी, इची हो रही है, अनबेरेबल इची हो रही है, रेडनेस हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, या वहाँ से कोई गंदी स्मेल आ रही है, which could be indicative of a fungal infection or any discoloration in skin. I think that's a high red flag कि आप अपने pediatrician को तुरंत दिखाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, और जो बराबर दवाइयाँ हैं उसके लिए वो शुरू होनी चाहिए। डॉक्टर, जब हम लोग एज अ मदर हम लोग न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, तो कि बच्चे जी, का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, स्पेशली फॉर टॉडलर्स, क्योंकि उनके यस, एज में ना उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, एंड भी जी, हमारा अगर चैलेंज यही रहता है कि अच्छे से खाए, अच्छे से पिए यस, तो अच्छा रहेगा। तो स्किन यस, रूटीन को अच्छा न्यूट्रिशन हेल्दी रखने के लिए व्हाट आर या द काइंड ऑफ फूड्स जो हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, जिनकी उनका स्किन जो है वो अच्छा रहे, इंटैक्ट रहे, और ये तकलीफ आगे ना आए? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। आई थिंक न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि स्किन जो हम हर कोई चाहता है, हर मदर चाहती है फॉर बेबी एज वेल एज फॉर हर, स्किन बहुत अच्छी रहे, बहुत ग्लोइंग रहे, बहुत शाइनिंग रहे। और उसके लिए हम कौन से कोई भी प्रोडक्ट्स लाइक महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स हम लगाने पे, उन पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन स्किन का एक्चुअली जो पोर्शन है वो बाहर से ज़्यादा अंदर से होता है। जैसे प्लांट को आप मैन्योर डालोगे, वाटर डालोगे, तभी वो अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो आई थिंक द फूड which is rich in vitamin C. Just a moment. या. Sorry, I'm sorry for that. So, नो वरीज. food which is रिच इन विटामिन सी, जैसे कि ऑरेंजेस हुआ। अक्सर मैं विंटर में अपने बच्चों के जो भी खाना है, जैसे कि दाल दे रहे हैं, राइस दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आई स्प्रिंकल सम लेमन in every meal. अच्छा. So ओके. vitamin C not only gives immunity to the child, it's also rich source of antioxidants, anti-inflammation, and also एक अंदरूनी बहुत अच्छा ग्लो देता है बेबी को। Also foods like nuts and seeds जो बच्चे को गर्मी भी दे, at the same time it's good for the skin. It's very rich in omega 3, ओमेगा 3, जैसे कि वॉलनट्स हुआ, ठीक है, आमंड्स हुए, फिर हमारे सीड्स हुए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ। टॉडलर्स को ये देने के लिए चैलेंज तो आता है, पर आप उसको जैसे कि उनके रोस्ट करके इनकी पाउडर बनाओ, वो पराठे में डालो, या फिर जस्ट स्प्रिंकल इट ओवर योर दाल खिचड़ी और पुट इट इन सूप, इन दैट वे इट कैन गेट मास्क्ड। और अदरवाइज मिल्क शेक बनाओ विद डेट्स, मतलब खजूर हुआ, नट्स, सीड्स करके मिक्स करके। तो ओमेगा 3 टू द बेबीज। अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो एग्स, then your this fish also is a very good source of vitamin E as well as omega 3. All this is good for great skin. राइट. सो जब अंदर से नरिशमेंट हो ताज़ा, तो स्किन डेफिनेटली ग्लो होने ही लगता है, एंड द बेबी Yes, चीक्स वगैरह हम and लोग also फील कर सकते हैं, राइट? यस, एंड ऑल्सो इन विंटर्स बच्चे को प्यास बहुत कम लगती है, तो कई बार जी. हाइड्रेशन का जो पार्ट है वो हम इग्नोर कर देते हैं। तो बराबर है. इंश्योर करना है फॉर अ टॉडलर एटलीस्ट 1.5 लीटर to 1.5 लीटर वाटर बेबी ड्रिंक करे। अगर वाटर प्लेन फॉर्म में नहीं पी रहा है तो मे बी जूसेस या इन्फ्यूजन्स विद लेमन वाटर, मिंट,
ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम बच्चे को लेकिन इंश्योर करना कि उनका हाइड्रेशन रहे, उससे भी कई मतलब हेल्प होगी उसका स्किन मॉइस्चराइज रहने में अंदर से। डेफिनेटली। जब भी हम बच्चे को टच करने जाते हैं तो द पेरेंट्स आर लिटिल बिट वरिड, गाल खींच रहे हैं या गाल गुच्ची ले रहे हैं, द जी किड्स आर जी। अ लिटिल बिट टेकन अबैक। तो क्या आई मीन हम्म। इन विंटर्स और फॉर अ चबी चाइल्ड शुड वी डू दिस, बिकॉज पता नहीं इफ द हैंड्स आर वॉश्ड और नॉट, और इफ इट कुड कॉज एन इन्फेक्शन टू द चाइल्ड. I mean, how should we avoid these kind of, touch, this kind of touch given by any kind of a stranger or a आई नो relative? इट्स वेरी टेम्पटिंग एंड हर किसी को लगता है स्पेशली विंटर्स में बच्चे के चीक्स जो है वो बहुत एप्पल रोजी Correct. एप्पल्स जैसे हो जाते हैं, तो हर किसी का मन करता है कि उसके चीक्स को हाथ लगाना चाहिए, बट कई बार ये चीक्स अगर ड्राई हो वगैरह, एंड प्लस ऑल्सो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। बच्चों की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, प्लस इफ इट इज ड्राई देन इट कैन इंक्रीज द इरिटेशन, द फ्लेकीनेस हो तो उसमें थोड़ा एब्रेशन होके थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा और रेडनेस भी आ सकती है, सो इट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। Right. So it's So not a habit that we would encourage. definitely. And as a mother, we would also feel protected ki if anybody doesn't touch, that will be there. But there are Yes, some cute babies whom we cannot resist, even helping it out. So at yes, that point of time, it becomes yes, difficult. So with this, a mother is asking yes, me a question that my child has a oily yes, skin, and what kind of a routine yes. should I follow for that child? Okay, that's an interesting question. थैंक यू सो मच। जैसे ऑयली स्किन, सबसे पहली बात, बच्चे में ऑयल ग्लैंड्स यानी जो ऑयल ग्लैंड्स जिससे ऑयल प्रोडक्शन होती है वो प्यूबर्टी तक आती ही नहीं है, ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, जो बर्थ पे हम देखते हैं कई बार बेबीज को ऐसे ना पिंपल्स जैसे छोटे छोटे बॉयल्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मिलिया, एंड दैट हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ मदर्स हॉर्मोन्स का इम्पैक्ट रहता है। एज द मदर का हॉर्मोन इम्पैक्ट recedes in like few days time, वो बेबी के फेस की रैश भी चली जाती है। उसके बाद इन टॉडलरहुड बेबी के फेस की या स्किन की ओवरऑल स्किन में कभी ऑयली स्किन एज सच आपको नहीं दिखेगी, नॉर्मल दिखेगी या ड्राई दिखेगी, लेकिन ऑयल प्रोडक्शन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो प्यूबर्टी यानी 11 इयर्स 12 इयर्स उसके बाद ही पाए जाते हैं। तो एज सच कोई स्पेशल केयर आपको ऑयली स्किन के लिए नहीं करनी है। जो नॉर्मल रूटीन केयर जिसका मैंने पहले शॉर्ट बाथ्स, मॉइस्चराइज द स्किन, यूज सनस्क्रीन व्हेन यू आर गोइंग आउट, तो वही आपको केयर लेनी है। Right. And a mother has newly found out that her child has childhood eczema. Now she is यस। worried because उनके फैमिली में किसी को नहीं था, and this is her child who's having it for the first time. So how उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, नंबर वन. एंड नंबर टू, क्या होम ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज इसके लिए है? Yes or no? And then what is the way to go ahead if there are no home remedies? ओके, एक्जिमास यूजुअली एलर्जिक होती है। कई बार ये जेनेटिक पाया जाता है, मतलब इट रन्स इन द फैमिली, इट कुड बी एसोसिएटेड विद अदर पीडियाट्रिक एलिमेंट्स जैसे कि वीजिंग यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसमें वीजिंग हो, सॉरी वीजिंग जरूरत पड़ती है, सॉरी। और कभी कभी ये जीआई यानी कि टमी अपसेट, एलर्जिक कोलीक वगैरह इसके साथ भी पाया जाता है। कभी कभी एक्जिमा ये अलोन एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी भी आता है। ठीक है, तो अगर एक्जिमा है, यहाँ पे बच्चे की स्किन बहुत ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, रिपीटेडली ईचिंग आ रही है, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट टेक सम आइस एंड डैब इट ओवर दैट एरिया, उससे कुछ हद तक बेबी की इचिंग जो है वो कम हो जाएगी। अगर बहुत माइल्ड एक्जिमा है, ज्यादा नहीं है, तो मे बी घर के बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लाइक इवन समथिंग लाइक एन ऑर्गेनिक घी कैन Right. वर्क एज अ मॉइस्चराइजर। अदरवाइज अगर आपको इमोलियंस यूज करने हैं तो समथिंग लोशन जिसमें एक्वा बेस्ड हो, उससे बेटर है कि आप क्रीम यूज करें या फिर ऑइंटमेंट यूज करें जो ज्यादा जिसमें ऑयल बेस्ड और ज्यादा मॉइस्चराइजर दे। क्रीम भी समथिंग लाइक सेरामाइड एंड फिलाग्रीन कंटेंट उसमें हो, जो Right. स्किन की नॉर्मल ऑयल बैरियर जो है उसको मतलब तो आप जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसमें आप देखिए सेरामिड और फिलाग्रीन कंटेंट हो। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो व्हेन यू गो टू योर डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब यू लो डोज स्टेरॉइड क्रीम टू स्टॉप दैट एक्जिमा।
उसके Okay. साथ अगर इचिंग बहुत है बच्चे को, यू कैन जस्ट डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड कि ज्यादा इचिंग करके वहां पे वुंड ना क्रिएट करे, कोई Uh-huh. एक्टिविटी में बेबी को बिजी कीजिए। ऑल्सो जब वुलन्स आप पहना रहे हैं उसके नीचे आप कुछ सिल्की क्लॉथ या कॉटन पहना दीजिए कि बच्चे को डायरेक्टली उससे एब्रेशन होके और इरिटेशन नहीं हो। Correct. So, doctor, this brings me to one more question that I would like to ask you. Generally, जब हम जी। लोग विंटर्स के स्किन केयर रूटीन बोलते हैं, हमारे बच्चों के जेनाइटल्स के वहाँ पे भी स्वेट पोर्स होते हैं, एंड किड्स गेट यस। डायपर रैशेस. और विंटर्स में यस। जनरली वी कैन नॉट कीप देम ओपन, द मदर इज अ लिटिल वरिड, और वहाँ पे रेडनेस और इचनेस भी ज्यादा आ जाता है. तो इस वक्त जी। हाउ शुड अ मदर टैकल दिस प्रॉब्लम? But rashes are something very common. Again, it's again a source of a fungal infection in that area. तो हमें अलर्ट रहना है कि बेबी जब भी डायपर सॉइल करे हम तुरंत उसको क्लीन करें और चेंज करें। ठीक है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड थिंग इज वहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड बेस्ड क्रीम्स, डायपर रैश क्रीम्स वहाँ पे लगा सकते हैं अगर कोई रेडनेस है या एक्सकोरिएशन है वहाँ पे। एंटी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे दिख रहा है, सो इन दैट केस वहाँ पे हम उस जिंक ऑक्साइड के साथ आप कोई एंटी फंगल कॉम्बिनेशन में वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्रीम। Okay, so with this, we come to the end of this session, and your insights were really, really helpful. But before we, थैंक यू, conclude माई this, प्लेजर। take the end, can you just help me in summarizing the session with a few pointers? श्योर। सो आई थिंक विंटर में हमने सब जो बात है वो वी शुड लिमिटेड टू लेस देन 5 minutes. Do it with a lukewarm water and not a very hot water. Whichever cleanser you are using, instead of a soap or something very harsh, go for something which is neutral pH in skin pH से matching हो, something which is paraben free, sulfate free, alcohol free, fragrance free, that will soothe the skin and be very very mild on the baby's skin. उसके बाद आप टैप ड्राई कीजिए बेबी को जेंटली एंड अप्लाई द मॉइस्चराइजर इमीडिएटली आफ्टर बाथ, and preferably something which is like a cream or a ointment based rather than a moisturizing lotion. When you're taking the baby out, don't forget your sunscreen, preferably a physical sunscreen which is a combination of zinc oxide and titanium dioxide will be preferred over a chemical sunscreen. ठीक है, and also be very very vigilant because this is also an opportunity for a lot of fungal infections to grow in this period. So fungal infection जिसमें बहुत dryness, itchiness, unbearable itchiness हो रही है, any discoloration of the skin हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हमें vigilant रहना है और हमारे डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है अगर हमें जरा सा भी डाउट आ रहा है कि वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कुछ ऐसा कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम and we should consult our pediatrician immediately. Right. So, Doctor, thank you for taking time out from your busy schedule and giving us a valuable input and information in this live chat. क्योंकि winters अभी harsh है, temperatures are going down. Along with that, we are understanding the changes in the environment, which can definitely hamper our child's skin care. You being a mom for a toddler, your inputs are really valuable, and being a pediatrician, the information provided to us at Baby Chakra has helped to understand this topic more in depth. Thank you so much for joining us, and to all these mothers Thank who you, have Dr. been Pooja. listening to us live. आप प्लीज बेबी चक्र का ऐप डाउनलोड कीजिएगा. डॉक्टर सुशांता विल बी अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेरी ऑफ योर्स. यू कैन रीच आउट टू हर on the app or on the Instagram handle which she has just mentioned. Doctor, just for the last time, can you please mention your Instagram handle? It's Dr. Sush underscore pediatrician mom. Dr. Sush, SUSH underscore pediatrician mom. Okay. Thank you so much. So it was lovely talking. And all the moms over here, thank you for sparing your time. And we loved having you over here. Thank you. My pleasure, Dr. Pooja. Thank you. Bye.